Hello everyone, welcome to all of you in FFB Live Chemistry class। आज के क्लास में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर चल रहा है उसी में हम ग्रुप 14 के मेंबर कार्बन के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इस पे डिस्कस किया था। तो आज क्या है कि क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। तो कार्बन वैसे तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी कार्बन के कंपाउंड पे पूरा डिटेल हम स्टडी करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो लेकिन हम आज यहाँ कार्बन के उन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं और इनको कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस नहीं करते, जबकि हैं ये कार्बन के ही कंपाउंड। तो इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती जुलती होती है, तो इसलिए हम इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही इनकी स्टडी करते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन पढ़ा है हमने, लेकिन आज के क्लास में हम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद की क्लास में हम कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन पे भी डिस्कस करेंगे। नो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। Carbon forms a number of oxides. Two of them, carbon monoxide and carbon dioxide, are extremely stable and important. These are described as less stable oxide as C2O3, which is known as suboxide, C5O2, C12O9, C2O and C2O3। अब हम पहला जो इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। It is found in small amounted volcanic gases, chimney gases, exhaust gas of internal combustion of engine and coal gas. How to prepare the preparation? The following method can be applied for the preparation of carbon monoxide. First, by heating oxalic acid with concentrated sulfuric acid. A mixture of carbon monoxide and carbon dioxide is obtained. Sulfuric acid act as dehydrating agent. CO2 is removed by passing the gaseous mixture through caustic soda or caustic potash. रिएक्शन इस तरह से होता है, ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू lose one water molecule and forms carbon dioxide and carbon monoxide and carbon dioxide। तो यहाँ पे किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं? बाय पासिंग द गैसियस मिक्सचर थ्रू कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटाश, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली जाती है और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। सिमिलरली बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड with concentrated sulfuric acid, only CO, carbon monoxide obtained। फॉर्मिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो सिर्फ हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। The second method, by the reduction of oxides of heavy metal with carbon. Heavy metal oxide like iron oxide reacts with carbon to form carbon monoxide and Fe2O3 reduces into metal, and zinc oxide reacts with carbon to form zinc and carbon monoxide. The third method, by reduction of carbon dioxide. Carbon dioxide can be reduced with carbon or zinc at high temperature. CO2, when passed over red hot zinc, a mixture of carbon monoxide and carbon dioxide is obtained। Similarly, when carbon dioxide is passed over red hot charcoal, the reduction of carbon dioxide into CO occurs with the formation of a mixture of CO2 and CO. The gaseous mixture is passed through NaOH or KOH solution as to remove CO2.
Other method, by heating carbonates of calcium, barium or magnesium with zinc, CO is obtained. If one example है magnesium carbonate. When reacts with zinc, it forms magnesium oxide, zinc oxide and carbon monoxide. Now by heating potassium ferrocyanide with concentrate sulfuric acid. When potassium ferrocyanide in powder state is heated with concentrated sulfuric acid, CO is evolved. Dilute H2SO4 should never be used because it shall evolve highly poisonous gas HCl. The potassium ferrocyanide, when reacts with sulfuric acid to form potassium sulfate, ferrous sulfate and HCl, so डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होने पे ये बनता है हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि पॉइजनस गैस है। तो हम एक्सेस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, जिससे कि जब रिएक्शन होता है यहाँ पे तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये पूरा प्रोसेस पहले देखो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन साइनाइड बनाती है, जो वाटर से रिएक्शन करके फॉर्मिक एसिड बनाती है। कब ऐसा होता है, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में कंसनट्रेट H2SO4 लेंगे। अगर डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो बस इतना ही रिएक्शन होगा और ये पॉइजनस गैस बनेगी। उसके बाद जो सोल्यूशन में H2 है उससे फॉर्मिक एसिड बनता है, अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड से और अमोनियम सल्फेट बनाती है। ये ओवरऑल रिएक्शन है। फिर ये तुम्हारा अमोनियम सल्फेट बना इधर और इधर ये फॉर्मिक एसिड बना था सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाता है। ओवरऑल रिएक्शन ये है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, it forms potassium sulfate, ferrous sulfate, ammonium sulfate and carbon monoxide gas is evolved. Now manufacture of carbon monoxide, large scale production is known as commercial production or manufacture. Carbon monoxide is obtained in the form of water gas and producer gas when air is passed over a bed of white hot coke. The following reactions may occur. Coke react with oxygen to form carbon monoxide and also coke reacts with oxygen to form carbon dioxide, and coke reacts with water to form CO plus H2. This is known as water. This mixture of carbon monoxide and hydrogen is known as water gas. Carbon dioxide is reduced by passing the mixture over heated charcoal. तो कार्बन जो डाइऑक्साइड मिली है उसको चारकोल के ऊपर से पास करते हैं तो ये CO में, हीटेड चारकोल के ऊपर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है। The carbon monoxide produced always consists of nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, etc. Now properties. It is a colorless and odorless gas. It is slightly soluble in water. It is combustible gas but does not support combustion. Its density is nearly equal to the density of air. It is highly poisonous in nature. 1 part in 100 parts of air causes death in few minutes. The poisonous nature of CO is due to the fact that it combines with hemoglobin, a red coloring matter of blood, which is absorber or oxygen to form carboxyhemoglobin, which is not capable to absorb oxygen, and as a result of this, suffocation takes place. It is not decomposed by heat, it is neutral to litmus. Carbon monoxide burns with blue flame to form carbon dioxide. This is an exothermic process, means heat is evolved. Reacts with oxygen to form carbon dioxide. CO is a good reducing agent as it takes up oxygen and is converted into CO2. This property is utilized for the
extraction of metal from their oxides Fe2O3 यानी मेटल ऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड को जब इसको प्रेजेंस में गर्म करते हैं 600 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो आयरन मिलता है और ये कार्बन जो ऑक्साइड है यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड में गैस के फॉर्म में बाहर हो जाती है। इसी तरह जिंक ऑक्साइड लेड ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके जिंक और लेड हमें मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज अलग हो जाती है। It reduce failing solution also. failing solution में कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है जिससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके इसको रिड्यूस कर देती है CU2O में और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी तरह ये रिड्यूस करती है I2O5 को इनटू आयोडीन रिएक्शन करके आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। The bonding in carbon monoxide is represented as पहले भी इसको बता चुके हैं। Thus all the four valencies of carbon are not satisfied. It behaves as unsaturated compound and forms addition products with a number of substances. It reacts with hydrogen at 150 to 400 degrees centigrade in presence of ZNO, forms methyl alcohol. It also reacts with chlorine in presence of sunlight or a camphor to form phosgene gas, carbonyl chloride. Now it reacts with sulfur. When heated forms carbonyl sulfide. Carbon monoxide reacts with NaOH under pressure to form sodium formate. It reacts with ammonical solution of cuprous chloride to form CO. At a high pressure, it forms CuClCO. It combines with metal like chromium, nickel, iron, etc. The compound thus formed are called carbonyl. That is निकिल टेट्रा कार्बोनिल NI इसी तरह से पेंटा कार्बोनिल बनाता है Fe के साथ। ये रिएक्शन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकिल के साथ जबकि 180 डिग्री पर होता है आयरन से रिएक्शन। These reactions are used in the extraction and purification of metals. Now, uses of carbon monoxide. It is used as fuel in the form of water gas and producer gas. Producer gas मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, जबकि वाटर गैस मिक्सचर होती है CO और H2 की। Carbon monoxide is used in manufacture of methanol, synthetic petrol, formic acid, phosgene gas, which are the phosgene gas, which is highly poisonous gas. It is used as a reducing agent in the extraction of metal, and it is used in the extraction of nickel, that is Mond's process. Now, structure of carbon monoxide. इससे पहले भी हम इसको दिखा चुके हैं किस तरह से ये रेजोनेंट हाइब्रिड होता है इन तीन तरीके स्ट्रक्चर का। इस तरह से ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और इस तरह की स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। कार्बन एटम इज sp hybridized in carbon monoxide. One sp orbital is being used to form a single bond with oxygen atom, while the other sp orbital, which points away from the CO bond, contains a lone pair of electrons. The remaining two unhybridized p orbitals form 2p form 2 pi bonds with 2 p orbitals of oxygen atom. The presence of a triple bond is evident by the following facts. The bond length between carbon and oxygen is 1.13 angstrom, which correspond to carbon-oxygen triple bond. The value of dipole moment is small due to presence of lone pair of electrons on carbon. Carbon monoxide molecule act as ligand and can form a coordinate bond with certain atoms. Ligand जो है ये सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जो कि इस कार्बन के पास कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है। नाउ सेकंड कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड।
It is present in atmosphere to the extent of 0.03 to 0.05%. It comes to the atmosphere from animal breathing, decay of vegetable matter, burning of carbon and carbonious matter, etc. It also utilized by plants in photosynthesis. Thus, a carbon dioxide cycle is operating in nature and proportion of CO2 in the atmosphere remain about the same. It is found in combined state in the form of carbonates. Now, preparation of carbon dioxide. The following methods are used for its preparation. By the complete combustion of carbon. Carbon is burned in free supply of air to form carbon dioxide. If CO is formed, it also burned with pale blue flame forming carbon डाइऑक्साइड। इस तरह से CO बन जाती है। अगर पहले तो कार्बन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनाता है तो ये फिर से बर्न करती है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। Second method, by the action of dilute mineral acid on carbonates and bicarbonates. Mineral acid reacts with carbonates and bicarbonates and evolve carbon dioxide. That is calcium carbonate reacts with the acid, mineral acid HCl to form calcium chloride, water and CO2. Sodium carbonate reacts with HCl to form NaCl, H2O and CO2. Sodium bicarbonate reacts with HCl to form NaCl, H2O and CO2. The method is used in the laboratory for the formation of carbon dioxide. Marble pieces, that is calcium carbonate, are taken in Wolf's bottle, which is filled with a crystal funnel in the delivery tube. The other end of the delivery tube is kept into a dry cylinder through a cardboard disc. Pieces of marble are first covered with water and then concentrated HCl is added through the funnel. CO2 is formed, is collected by upward displacement of air. Sulfuric acid is not used for the preparation because calcium sulfate form gets deposited on the piece of marble. This prevents the further action of H2SO4 on marble piece. The third method, by heating carbonates and bicarbonates. The carbonates of less electropositive metals on heating decompose evolving carbon dioxide. Like this, zinc carbonate and uh, copper carbonate reacts with when heated to form zinc oxide, copper oxide and evolve carbon dioxide. Bicarbonates of all the metals decompose on heating with evolution of carbon monoxide. Sodium carbonate when heated to form sodium carbonate, this is sodium bicarbonate, forms sodium carbonate, water and carbon dioxide. And calcium carbonate when heated to form calcium carbonate, water and calcium and carbon dioxide. Now large scale formation, this is manufacture. It is manufactured by fuel gases. The fuel gases producing during the combustion of coke or coal contains large amount of carbon dioxide mixed with nitrogen, carbon monoxide, oxygen, etc. These gases are passed through potassium carbonate solution which absorb carbon dioxide. बाकी को छोड़ के ये absorb कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को और बनाता है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Potassium carbonate solution is then boiled and get carbon dioxide like this. इसको boil करते हैं तो पोटेशियम कार्बोनेट H2O और क्या मिल जाता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड. अब now from lime kilns, when lime is manufactured by the calcinated of limestone, carbon dioxide is obtained as a byproduct. The reaction is this. From fermentation, during fermentation, when
molasses are changed into alcohol. A large amount of carbon dioxide is obtained as a by-product. शुगर जब इसका जो है फर्मेंटेशन कराते हैं तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, it is colorless, odorless and tasteless gas. It is slightly soluble in water under ordinary pressure, but at high pressure the solubility is high. It is heavier than air. It is easily liquefied under pressure into a colorless mobile liquid. If carbon dioxide under pressure is allowed to escape through a nozzle, a white solid that is dry ice is obtained. Solid carbon dioxide is a soft, white, snow-like substance. It sublimes and leaves no residue. Solid carbon dioxide is used as a refrigerant under the commercial name Chick Dry Cold. It is used in the transport of perishable food materials. It provides cold as well as the inert atmosphere, which helps in killing the undesirable bacteria. It is neither combustible nor supporter of combustion. However, burning of magnesium, sodium or potassium continues in the gas. We burn this magnesium, sodium to form magnesium oxide and कार्बन अलग हो जाता है। इसी तरह से सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, कार्बन अलग होता है और ये सोडियम ऑक्साइड फिर से रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। It is to be noted that carbon dioxide is used as a fire extinguisher, but it cannot be used in the case of active metal fires, which have affinity for oxygen. Carbon dioxide acts an oxidizing agent when heated with zinc, iron or carbon. These are oxidized. When reacts with zinc, it forms carbon monoxide, and when reacts with carbon it forms carbon monoxide. Carbon dioxide is an acidic oxide. It dissolved in water forming unstable carbonic acid. Dissolved in water to form carbonic acid जो कि unstable होता है और फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है. It combines with alkalis to form two series of salts, carbonates and bicarbonates. Reacts with alkali and form sodium carbonate, and with excess of CO2 carbonate is converted to sodium bicarbonate. The reaction is lime water. This is calcium hydroxide is turned milky on passing CO2 with the formation of insoluble calcium carbonate. कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, इसको लाइम वाटर है ये, तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे कि कलर वाटर का मिल्की हो जाता है, सोल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है. द मिल्कीनेस डिसअपीयर ऑन पासिंग मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड with the conversion of calcium carbonate into sodium soluble calcium bicarbonate. ज़्यादा पास कर देने पे सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ बेसिक ऑक्साइड लाइक Na2O, K2O etc. to form corresponding carbonates. Reacts with K2O, Na2 to form potassium carbonate and sodium carbonate. Carbon dioxide is converted by plants in the presence of sunlight and chlorophyll into glucose and higher carbohydrate. This process is known as photosynthesis. CO2 reacts with water in presence of sunlight and chlorophyll to form glucose and oxygen is evolved. Now, use of carbon dioxide. It is used in the manufacture of aerated water,
Solid CO2, that is dry ice, is used in the refrigeration. It is a superior refrigerant than common ice because it can produce very low temperature and does not form liquid on melting. Carbogen is a mixture of O2 and CO2, 5 to 10%. It is used for artificial respiration in case of pneumonia patient and victims of CO poisoning. It is used in the manufacture of white lead and sodium carbonate in the solvay process. Carbon dioxide is used as a fire extinguisher. The use of common fire extinguisher is based on the production of CO2. A soda acid fire extinguisher contains a concentrated solution of sodium bicarbonate and a bottle containing concentrated sulfuric acid. When the apparatus is turned inside down, the acid flows out of the bottle and reacts with sodium bicarbonate to produce carbon monoxide, which help in the जो आग लग जाती है तो उसको बुझाने का काम जब किया जाता है तो इसका यूज होता है. Aluminium sulfate in place of concentrate sulfuric acid is used in foam type fire extinguisher. When solution of sodium bicarbonate and aluminum sulfate reacts, carbon dioxide is liberated along with the hydrolysis of aluminum sulfate, producing aluminum hydroxide in the form of foam. Aluminum sulfate reacts with sodium bicarbonate to form aluminum hydroxide, sodium sulfate, and a large amount of carbon dioxide. And this sodium sulfate reacts with aluminum sulfate reacts with water to form aluminum hydroxide and sulfuric acid. Aluminum hydroxide deposit on the burning articles and thus cuts off their contact with the air. Now CO2 is used by plants in the form of food. Structure of carbon dioxide. Carbon dioxide has a linear structure since its triple moment is since its dipole moment is zero. Both the oxygen atoms are linked by double bond. The structure is this. The CO bond length is 1.15 angstrom, which is less than calculated value of double bond C double bond O. Thus, it is believed that CO2 molecule is a resonance hybrid of the following structure. The formation of the molecule can be explained on the basis of hybridization. Carbon is sp hybridized in carbon dioxide. The hybrid orbitals form sigma bond with p orbital of each oxygen atom. The unhybridized 2p orbitals of carbon atom form 2p bond with the oxygen atom. इस तरह से ऑक्सीजन एटम में इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s2 2p4. कार्बन एटम में यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज एटम है जो कि इसका एक sp हाइब्रिडाइज है और ये दो जो अनहाइब्रिडाइज्ड है तो एक पाई बॉन्ड बनाता है और एक जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन एटम के साथ. तो ऑक्सीजन एटम इस तरह से बन जाता है ये. Now carbon forms some less stable oxide, that is C3O2, C5O2 and C12O9. Graphite oxide are C2O and C2O3, which are still less stable. Carbon suboxide is formed by dehydration of malonic acid. This is malonic acid in phosphorus pentaoxide when heated to forms carbon suboxide. Some important reactions of carbon suboxide is C3O2 plus H2O से फॉर्म होके ये रिएक्शन करके ये मेलोनिक एसिड बनाता है. HCl से रिएक्शन करके मेनोलिल क्लोराइड बनता है. अमोनिया से रिएक्शन करके मेलोनाइयामाइड बनता है.
Now comparison of carbon monoxide and carbon dioxide. Both are the gases formed by the carbon with oxygen. Carbon monoxide is poisonous, but carbon dioxide is non-poisonous, but life is not possible in its atmosphere due to lack of oxygen. Carbon monoxide burns with blue flame while carbon dioxide not burns. Carbon monoxide neutral oxide, but carbon dioxide is a acidic oxide. Carbon monoxide CO bond length is equal to 112 pm. In carbon dioxide CO bond length is 115 picometer. Density दोनों की कार्बन मोनोऑक्साइड की 1.25 ग्राम पर मोल, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की 1.97 ग्राम per mole. It is 1.5 times heavier than air. Carbon monoxide is a reducing agent, but CO2 does not act as a reducing agent. Heat of formation of carbon monoxide is 110.5, while the heat of formation of carbon dioxide is minus 393.5 kilojoule per mole. The other compounds of uh, carbon, mm, carbonic acids, carbonates, and bicarbonates. Carbon dioxide is an acidic oxide. The solution of carbon dioxide in water shows feeble acidic character. This is believed due to the formation of carbonic acid. Carbon dioxide, when dissolved in water to form carbonic acid, CO2 is called carbonic anhydride also. Carbonic acid is known only in solution and has never been isolated in free state. The carbonic acid is a dibasic acid and it forms two series of salts by replacement of one or both of hydrogen atom. H3CO3 H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। उसके अलावा ये आगे टूट करके हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन देता है। Acid salts are also called bicarbonates or hydrogen carbonates. These contains H bicarbonate and HCO3 minus. Normal salts are also called carbonate. These contains carbonate ion. The metallic carbonates or bicarbonate are prepared by the following method. First, by passing CO2 through the solution of base. So NaOH reacts with carbon dioxide to this form sodium carbonate and water. This reacts with carbon dioxide and water to form sodium bicarbonate. Like this, calcium hydroxide reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate and water. And this calcium carbonate reacts with CO2 in presence of water to form calcium bicarbonate. Now by reacting basic oxide and CO2, basic oxides like K2O, NO2O reacts with carbon dioxide to form potassium carbonate and sodium carbonate. By double decomposition, that is by using sodium carbonate. Sodium carbonate reacts with calcium chloride to form calcium carbonate and NaCl. This is known as double decomposition. Like this, barium chloride reacts with sodium carbonate to form barium carbonate and sodium chloride. Now, properties of these solubility: except alkali metals, carbonates, all other carbonates are insoluble in water. The bicarbonates are soluble in water. The bicarbonates of alkali metals are known in solid state, while the bicarbonates of alkaline earth metals are only known in solution. Now, action of heat. All bicarbonate decompose on heating and evolve carbon dioxide. The carbonate form may further decompose except alkali metal carbonates. So, calcium bicarbonate
when decomposed to form carbonates, calcium carbonate H2O and CO2, and sodium bicarbonate forms sodium carbonate H2O and CO2. Alkali metal carbonate except Li2CO3, lithium carbonate do not decompose on heating. All other carbonate decompose on heating with evolution of carbon dioxide. ये सारे कार्बोनेट से हीट करने पे ये सारे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। सिल्वर कार्बोनेट हीट करने पे सिल्वर में अलग हो जाता है और CO2 और ऑक्सीजन देता है। Action of acids, both carbonates and bicarbonates are decomposed by the action of acid with evolution of carbon dioxide. Sodium carbonate reacts with HCl तो evolution of carbon dioxide होती है, साथ में ClH2O बनेगा। सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करके बनाता है NaCl H2O CO2 and zinc carbonate reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate H2O and CO2. Now action of magnesium sulfate. This is the reagent with which carbonates and bicarbonates can be distinguished and tested. Soluble carbonates form an insoluble white precipitate with magnesium sulfate in cold. सोडियम कार्बोनेट तो फॉर्म करता है वाइट प्रेसिपिटेट और सोडियम सल्फेट। Bicarbonate do not form any white precipitate with magnesium sulfate in cold. However, when such solution is heated, a white precipitate appears. ये soluble magnesium bicarbonate बनता है इससे रिएक्शन करके। इसको हीट करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, साथ में गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नाउ इफेक्ट ऑफ phenolphthaleins. Soluble carbonates produce pink color with phenolphthalein showing higher pH value, while carbonates do not give pink color with phenolphthalein. उसके बाद सिलिकॉन के कंपाउंड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो इस क्लास में तो नहीं, हम अगली क्लास में बताएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो कंपाउंड है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका। The molecular formula is SiO2. It is commonly called silica. Most of the earth crust, 95% is made up of silica and silicates. It occurs in nature in various crystalline and amorphous form. The main crystalline forms of silica are quartz, tridymite, and crystopite. It occurs in टू फॉर्म अल्फा एंड बीटा। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन के बारे में, क्योंकि कई कंपाउंड हैं तो उसमें टाइम लगेगा। तो लास्ट क्लास सिलिकॉन के बारे में होगा, तो उसके बाद हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएगा का चैप्टर। तो इसको ध्यान से पढ़ते रहो, सारी चीज़ें पढ़ डालो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सारी जानकारी पूरी सारे ग्रुप्स के बारे में इस चैप्टर से मिल जा रही है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी जो है वो करीब करीब कंप्लीट है। कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा।